अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप मेरी पिछली दो वीडियोस दैट वर ऑन आयतुल कुर्सी एंड वर्सेस फ्रॉम सूरह अनआम आपको बेनिफिट कर रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा दैट व्हाट are the main themes and the significance of these surahs. Okay, so in this video I am going to explain you the main theme and the significance of the verse from Surah Fussilat. Surah Fussilat is surah number 41 of the Holy Quran and the verse is 37. So let's begin. The main theme. This verse of Surah Fussilat, also known as Hamim, was revealed during the early years in Makkah. सूरह फसलत को हम सूरह हामी व सजदा भी कहते हैं और ये एक मक्की सूरह है. फसलत मीन्स क्लियरली स्पेल्ड आउट मैसेज ऑफ कुरान. इट डिस्कस द थीम ऑफ अल्लाह इन हिमसेल्फ बाय डायरेक्टिंग अटेंशन टू द वर्शिप ऑफ गॉड अलोन. जैसे पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको आयतुल कुर्सी और वर्सेस फ्रॉम सूरह अनआम 101 till 103 के बारे में बताया था, उनकी भी मेन थीम थी अल्लाह इन हिमसेल्फ. सो सिमिलरली सूरह फसलत की भी यही थीम है, अल्लाह इन हिमसेल्फ. सो फसलत मीन्स क्लियरली स्पेल्ड आउट मैसेज ऑफ कुरान. कुरान का जो भी मैसेज है, कुरान का क्या मैसेज है, दैट अल्लाह इज़ वन एंड ओनली, तौहीद, तो वो मुसलमानों तक एज़ इट इज़ पहुंचा दिया जाए ताकि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और ना ही अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करें, क्योंकि सिर्फ़ अल्लाह ही है जो कि इबादत के लायक है और कोई भी उसके जैसा नहीं जिसकी इबादत करी जाए. We come to know that celestial bodies and the cycle of nature on earth are the signs of Allah and help us to identify our true Lord and His presence. It means that दुनिया एक निज़ाम के तहत चल रही है और वो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है. लाइक द अर्थ, द सन एंड ऑल अदर प्लैनेट्स, ये एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सही है. एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है. एक प्रोसेस है जो कि अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन किया हुआ है और अल्लाह ताला ही उस निज़ाम को चला रहा है. दुनिया में ऐसी मिसालें होती हैं कुछ चीज़ों की, जैसे द सोलर सिस्टम, जैसे द रेनफॉल सिस्टम, द ग्रोथ सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. मतलब कुछ ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं जो कि हमें अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं कि देयर इज़ सम सुप्रीम बीइंग जो कि इन निज़ाम को चला रहा है. बिकॉज वी एज ह्यूमन बींग्स, वी कैन नॉट कंट्रोल द सोलर सिस्टम, वी कैन नॉट carry out the rainfall system, we cannot carry out the creation of human beings. ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ और यकीनन अल्लाह ताला के ही हाथ में और अल्लाह ताला ही करता है, जो कि ये सब चीज़ें हमें खुदा की मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस द मूवमेंट ऑफ द विंड. वी एज ह्यूमन बींग्स, लाइक साइंटिस्ट, अब जाके काफ़ी चीज़ों में अपनी साइंस चला रहे हैं. दे आर इन्वेंटिंग मैन मेड थिंग्स, बट बहुत सारी चीज़ें खुदा ऑलरेडी बना चुका है एंड द साइंटिस्ट कैन नॉट कम्पीट विद दोज थिंग्स. लाइक द मूवमेंट ऑफ विंड, वो अल्लाह ताला के हुक्म से चल रही है और अल्लाह ताला ही उसको चलाता है और उसको रोक सकता है. So the Quran says, "Behold, in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night and day, there are indeed signs for men of wisdom." एक समझदार आदमी के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में कुछ निशानियाँ रखी हैं.
जिससे इंसान को इस बात का यकीन हो जाता है कि हाँ, उससे बढ़कर कोई ज़ात है जो कि दुनिया का निज़ाम चला रही है। कोई भी इंसान दिन से रात या रात से दिन नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है। अल्लाह ताला ही मशरिक़ से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। सो दीज आर द साइंस जो कि एक समझदार आदमी जिसके पास शऊर है वो समझ सकता है कि सिर्फ अल्लाह ही है जो कि इन निज़ामों पे कादिर है, जो कि इन निज़ामों को तकमील कर सकता है और कोई और इंसान नहीं कर सकता। It further emphasizes that Allah alone should be praised and worshipped and nothing should be associated with him. इस बात का हमें यकीन हो जाता है, लाइक वी आर बॉर्न मुस्लिम्स, ठीक है, हमें बचपन से ही होता है कि भाई हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, लाइक आई हैव टोल्ड यू the movement of wind, the creation of humans, the system of rainfall, the system of weather changing, all of these things. So we realize that there is somebody else who is controlling such things. मतलब कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता. So then we realize that yes, it's Allah Ta'ala who have control over these things, और सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो कि हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ पे कादिर है, और सिर्फ हमें उसी की इबादत करनी चाहिए और किसी को उसके साथ शरीक नहीं ठहराना चाहिए. So the significance is this passage is important in daily lives of Muslims. The foremost of God for human beings is to worship Him alone. Tawheed, oneness of God, is neither a group of letters that must be pronounced to become a Muslim, nor merely a conceptual belief, but it is needed for the survival of Muslims. So it means that ये जो पैसेज है ये हमें हमारी डेली लाइफ्स में किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट होता नज़र आता है. हमारा बिलीव दिन ब दिन इस बात पे जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है कि येस, इट्स ओनली अल्लाह ताला जिसकी हमें वर्शिप करनी चाहिए. ठीक है, वी प्रे 5 times a day बिकॉज एक तो अल्लाह ताला का हुक्म है, ठीक है, बट what's the thing that persuade us to worship? It's that it's only Allah Ta'ala who exists, who is the creation of mankind, who is the creation of the world, the hereafter, the heavens and the hell, and each and everything that happens in this world is because of Allah Ta'ala, or there is nobody else who is involved in this with him, and it's only Allah Ta'ala whom we should worship. सो तौहीद जो बेसिकली ये एक ईमान है, ये किसी वर्ड्स के उसमें जो है वी कैन नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, वी कैन नॉट से दैट सही है मुझे तौहीद है, मेरे अंदर तौहीद का बिलीफ है. नो, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन इट, एंड नो बडी शुड बी एबल टू remove this belief from us. Nobody could force us to worship someone else, to believe in someone else. एक तरीके से हम मुसलमान हैं, but the belief of Tawheed strengthen us to be strong Muslims. And the concept of Tawheed, like the oneness of Allah, like it's only Allah Ta'ala who exists, and He is the one who is going to वही हर चीज़ पे कादिर है और कोई और किसी भी चीज़ पे कादिर नहीं. needs to be in our daily lives we should regulate this belief, like we should pray
to Allah Ta'ala, and in our namaz, in our duas, we should pray that Allah Ta'ala हमारे इस ईमान को और मजबूत करे. So at the day of judgment, like when it's the day of Qiyamah, so there shouldn't be any evils that could hinder our disbelief. Just like the sun and moon, which have only to accomplish the task of moving in the prescribed cycle, Muslims have to move in God's land as He wants them, which means to worship in His prescribed manners. So there we have a solar system. We have certain planets that orbits around other planets. The sun and the moon, have particular directions. They move in certain cycles. It's because Allah has said it to happen. So जिस तरीके से अल्लाह ताला ने सोलर सिस्टम को एक मखसूस अंदाज में चलने पे रखा है, ठीक है. सो अल्लाह ताला वांट्स कि हम मुसलमान भी एक तरीक़े निज़ाम पे चलें, ठीक है. एंड इफ़ वी मूव आउट ऑफ ट्रैक, so we are going to involve in sins, we are going to involve in bad acts. So अगर हम खुदा के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, which is worshipping Allah Ta'ala, offering prayers, keeping fast, giving zakat, so इसी तरीके से we are going to follow the straight path. And due to these things, we won't involve in sins, we won't involve in bad acts, and the shaitan is also going to stay away from us. Muslims in their daily lives learn from this passage that it is not the shining of the sun, not the shimmering of the moon that is responsible for the cycle of the day and night, but it is God who administers all such affairs. Thus, by consider themselves humble servants of God and turn to Him for salvation. सिर्फ अल्लाह ही है जो कि दिन को रात और रात को दिन करता है, जिसने ये सारा दुनिया का निज़ाम संभाला हुआ है. There is nobody else, who is running the system of this earth, this whole universe, and it's only Allah who is doing so because He has the authority. For instance, अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, so we have authority over it. We know how it is going to work. What are the process of making it happen. So Allah Ta'ala ने इस दुनिया को बनाया है, इस यूनिवर्स को बनाया है. So He knows how to handle it. कोई और उसको हैंडल नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला ही इसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हैंडल करता है. और एक प्रिस्क्राइब्ड रूटीन है जिसके थ्रू चीज़ें होती हैं. हर चीज़ का एक प्रोसीजर है. लाइक सूरज तुलू होता है, एक वक्त तक it shines, and then it sets. Then it's the moon that rises, and then we have night, then there are stars, and it happens within the certain time limit, and then again we have the sun. So there is certain procedure for things to happen, and it's only Allah who has the authority for this to happen. So we are the servants of Allah. Look, as I have told you before that Allah Ta'ala को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है. हम अल्लाह की इबादत अपने बेहतरी के लिए कर रहे हैं. हम
अपने लिए जो है अल्लाह की इबादत कर रहे हैं. अल्लाह does not need our prayers. He has a lot of angels to worship him. हम इबादत अपने लिए कर रहे हैं ताकि हम we move to the right guidance, क्योंकि नमाज से ही हमें गाइडेंस मिलती है. And we should obey Allah and work accordingly, follow the prescribed things that Allah Ta'ala has told us to do. We cannot do amendment in those things. We cannot involve other people with him, because it's only Allah. What is the main theme? Allah in himself. We should only worship Allah, and it is only Allah Ta'ala who has command over each and everything. So this is the main theme and the significance of the verse of Surah Fussilat. I hope you have understood it. So don't forget to like my video, subscribe to my channel, and do share my channel with your other friends. And don't forget to press the bell icon so that you get notified about my next video. So Jazakallah khair, take care of yourselves. Allah Hafiz.